Hello, hello. Hi everybody. I hope everybody can hear me. सब मेरे को सुन सकते हैं और देख सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दो. हेलो हेलो हाय एवरीवन. आने देते हैं सबको. थोड़ा सा let people show up and then we can start. I can see a lot of people joining. Hi Ashwarya. हाय निखिल. हाय अनमोल. हाउ आर यू गाइज? फर्स्ट टाइम आप लोग मेरे को लाइव देख रहे हो. हाय राजपूत. जय श्री कृष्ण. हाय मनोज. हाय मानसा. हाय अदान. हाउ आर यू ब्रदर? ओला फ्रॉम मेक्सिको. हाय बंटी. लव यू टू ब्रदर. थैंक यू सो मच. हाय शुभम. Nice to see everybody. Hi Future Man, hello. Hi Bustling Creation. Hi Vivek. Hi everyone. Hello Mahi. Hi Niharika. Oh very nice. मेरे को I was expecting आराम से आएंगे लोग, लेकिन everybody is on time. मैं ही लेट हो गया. Sorry. I would like to say sorry to everyone first कि मैं लेट हो गया. But let's give 5 minutes for everyone to join. Hi Niharika. Hi Surya. प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बता दो कि मेरी आवाज़ और वीडियो इफ़ इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर. ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है सबको? क्लियर है. थैंक्स शुभम. आपको देखकर सर अच्छा फील हुआ. थैंक यू बंटी. थैंक यू. मेरे को भी आप लोगों को आज देख के बहुत, आप लोगों से बात करके आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी यू ऑल कम लाइव विद मी. चलो परफेक्ट है. आवाज़ अच्छी आ रही है, मतलब वीडियो भी क्लियर है. वेरी नाइस. हाय समृद्धि. हाय हर्षविला. हाय ट्रूली फ्री ग्राय. हाय ऋतिक. आज फेस रिवील किया है. यस. मेरे को बहुत मैसेजेस आते थे डीएम्स में एंड पीपल यूज टू आस्क मी के वेयर कैन वी सी यू, आपको कब देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं. तो मैं हमेशा यही कहता था कि आप लोग मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हो. मोस्टली मैं ही हूँ, बट वो एक एनिमेटेड इमेज है मेरी. नीता मारू. गुड मॉर्निंग. हर हर महादेव. जय भवानी. सो नाइस टू सी यू. ऑलवेज ब्लेस यू. हाय नीता जी. थैंक यू सो मच. Thank you for appreciating my work. It means a lot. Hi Pandit. Hi Harsh. Hi Aditya. Hi Ritik. मैं इंडिया में चंडीगढ़ से हूँ. मैं बताता हूँ. मेरे ख्याल से थोड़ा सा और लेट्स गिव 2 minutes मोर. सब आ जाएं तो फिर स्टार्ट करते हैं. I'll give you a short brief from where I am, what I do. मैं क्या करता हूँ, कहाँ से हूँ. Hi Vijit. Good morning. How are you? Vijit is also here. Nice to see everyone. Hi Sahil. What's up? Hi Anshu. Future men make an art on Navratri. Yes brother, absolutely, it's in my plans. बिल्कुल बनेगा. Thank you so much. Hi Mansi, how are you? Everybody is coming online slowly. तो I was thinking let's give 2 to 5 minutes. Ajay Singh, where are you from? Yes brother, stay tuned on the live. Stay on the live. We'll talk about everything. Hi Aditya. Radhe. Hi Ansh, how are you?
एक बार मैं फिर से जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एवरीवन, मेरी आवाज़ और ऑडियो और वीडियो ठीक आ रही है सबको? इट्स क्लियर, यू कैन सी मी, यू कैन हियर मी? आई कीप लुकिंग एट द कमेंट्स. My audio and video are clear to everyone? Ah, Shubham, always telling us. Ajay, thank you बताने के लिए. ठीक है ऋतिक, perfect. Great. So, start करते हैं. A lot of you keep messaging me, keep asking me where are you from, what do you do, how do you make this artwork, and a lot of other questions. वो सब मैंने लिस्ट डाउन करके रख लिए हैं, और मैं आपसे भी whatever questions you are going to ask in the comments to me, मैं उसका भी आंसर साथ साथ देते जाऊँगा. Thank you Devi, thank you so much. So I'll talk in English also and Hindi also, because दोनों ऑडियंस हैं मेरी. इंग्लिश समझने वाले भी हैं, हिंदी समझने वाले भी हैं, पंजाबी समझने वाले भी हैं, तो सारे सबको समझ आ जाए. सो आई टॉक इन बोथ लैंग्वेजेस, राइट? सो टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ to everybody, my name is JD. Every one of you know. Professionally, I am a graphic designer, a visual artist, and a brand consultant. That's my profession, and you guys know me as jd.ai.art because that is my art profile on Instagram. वो आप सबको पता ही है. And I am from India, Chandigarh. So a lot of people keep asking me where are you from, कहाँ पे रहते हो इंडिया में? मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब का कैपिटल है, सबको पता ही होगा. ब्यूटीफुल सिटी, यू गाइस शुड कम. जिसको भी मौका मिले कभी चंडीगढ़ आने का, प्लीज़ डू इट. इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, यू हैव टू कम विजिट हियर. आपने so I'm a visual artist and a graphic designer by profession, and this is this art profile, जो ये मेरी प्रोफाइल है JD Art, जहाँ पे आप मेरा आर्ट वर्क देखते हो, ये मेरा एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे आर्ट का. तो दैट्स व्हाट आई प्रेजेंट हियर फॉर एवरीवन टू सी. और आप लोगों ने बहुत 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 सपोर्ट दिखाया है, बहुत अप्रिशिएट किया है मेरे आर्टवर्क को, एंड फॉर दैट आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ऑल ऑफ यू जिन्होंने अभी ज्वाइन भी किया है लाइव पे. सो थैंकफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू, so thankful to every one of you, really grateful, and I really appreciate this. The amount of support that you have shown, आपने जो मेरे आर्टवर्क को दिखाया है, कभी एक तो पहले तो नेवर एक्सपेक्टेड, नेवर यू नो, जब मैंने स्टार्ट किया था पोस्ट करना और सब कुछ, तब भी सोचा नहीं था कि इतने लोग रेजोनेट करेंगे, इतने लोग कनेक्ट करेंगे. बट रियली इज अ प्लेजर, इट इज़ अ प्लेजर to make artwork for you, to interact with you guys, to read your comments, to read your DMs. Thank you for the DMs, thank you for the comments, thank you for the likes, thank you for the remixes, thank you for everything that you guys have been doing and showing so much love. It's really I'm really grateful. Thank you so much. So थोड़े और मोर देन दीज क्वेश्चंस दैट वेयर आर यू फ्रॉम, जो मैंने आपको बता दिया मैं चंडीगढ़ से हूँ, और आप क्या करते हो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, एक ब्रांड कंसल्टेंट हूँ, और एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ, जैसे आपको पता है. अब बहुत लोग मेरे को ये भी पूछते हैं, अच्छा एक सेकेंड, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. अभिषेक, सो JD, दिस इज ऑल योर इमेजिनेशन और यू रीड सम माइथोलॉजी एंड गॉट टू नो दैट इट शुड बी लाइक दिस? This is Abhishek's question. Very nice question. Is this all your imagination or you read some mythology and got to know what it should be like? So yes, Abhishek, it is mostly my imagination. That's why मैं कहता हूँ कि मैं एक काफ़ी avid visualizer हूँ. मैं चीज़ों को visualize करता हूँ, like, and obviously through my imagination, whatever I imagine something to be, and I do read mythology, I do read literature to get an idea, to learn more about these things.
if you don't know about it, then you can't imagine it, then you can't visualize it. You have to understand it a bit. आपको समझना पड़ता है. आप अगर एक बार समझ जाते हो, आप देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, आपकी अपनी विजुअलाइजेशन पर्सपेक्टिव उसके बारे में क्या होता है, वो सब सोच के फिर आई पुट इट इनटू my I use my tools to create it, and then I present it to you guys. So yeah, I was a lot of people keep asking me what inspires you to make such art. ऐसा artwork आप कब कैसे बना लेते हो, आपको क्या इंस्पायर करता है, क्या मोटिवेट करता है. तो पहली बात तो ये है कि जो नॉर्मल मेरा क्लाइंट वर्क होता है, जो प्रोफेशनल वर्क होता है फॉर क्लाइंट्स, वो अलग होता है. ये इन दिस काइंड ऑफ वर्क आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ. ये बेसिकली मेरी मोटिवेशन एक होती है कि मेरे को कुछ अपना आर्ट वर्क अपने तरीके से, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी सेड रूल्स के बिना अगर मुझे कुछ एक्सप्रेस करना होता है तो वो मैं इस फॉर्म में कर सकता हूँ. तो वो एक मेरी मोटिवेशन होती है कि मुझे अपने आर्ट वर्क को अपने तरीके से, अपनी क्रिएटिविटी को फ्लो करने देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, उससे मैं मोटिवेट होता हूँ टू एक्सप्रेस माई artwork through something, through a medium, through some kind of visual. So these visuals come out when I want to express myself. I hope that answers that. Then obviously to explore spirituality. मेरा theme of my artwork is mostly spiritual. It's mostly divine. Mostly भगवान के बारे में होता है. Mostly आप ज़्यादा डिवोशन के बारे में होता है. इट कुड बी कॉल्ड लाइक भक्ति आर्ट कह सकते हैं, फैंटेसी आर्ट कह सकते हैं इसको स्पिरिचुअल आर्ट वर्क कह सकते हैं, बिकॉज इट हैज़ दैट सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन इट, इट हैज़ दैट सेंस ऑफ डिविनिटी इन इट. तो दैट इज वन थिंग. इट हेल्प्स मी एक्सप्लोर स्पिरिचुअलिटी व्हेन आई मेक दीज थिंग्स, व्हेन आई एम सिटिंग डाउन और मैं बैठ के इन चीज़ों को बनाना शुरू करता हूँ, तो मैं एक जोन में होता हूँ, और उस जोन में ये विजुअल्स और ये परसेप्शन ज़्यादा क्लियर होती है मेरे लिए. तो यस, इट हेल्प्स मी एक्सप्लोर माई स्पिरिचुअल साइड. दैट्स वन मोटिवेशन. देन व्हाट एल्स? इज एनीबडी आस्किंग समथिंग? सॉरी, मैंने कमेंट्स देखना बंद ही कर दिया. मैं आपको जो बता रहा था उसका मैं. अच्छा, are you interested in creating art inspired by mythologies from other parts of the world, and what would they be? That's a beautiful question by Aidan. Aidan is one of my followers from Mexico, and he's a great guy. Hi Aidan, thank you for the question. He asks me, are you interested in creating art inspired by mythologies from other parts of the world? That's beautiful. Absolutely, bro. I'm absolutely interested in created artwork based on mythologies from all around the world, like the Roman mythology, maybe Islam, maybe I've already done something on Sikhism, so you can check that out. But yes, absolutely, I'd love to explore more mythologies, more spiritualities, more perspectives on these things, and make artwork about it. Absolutely, that is actually in my plans also, so why not? I'll do that. Poco Mano, make something for Chelsea as well. So अगर लोगों को पता नहीं है, चेल्सी एक फुटबॉल क्लब है जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ, और ये जिन्होंने कमेंट किया है ये भी आई थिंक चेल्सी को सपोर्ट करते हैं, पोको मानो. सो येस ब्रदर, एब्सोल्युटली, for sure, always supporting Chelsea, so I'll make something for Chelsea for sure. Everybody say hi to Aidan, say hi to Sameer, say hi to Indian Guru. Indian Guru is another great AI artist. You guys should go check him out as well. Let's see what else people are asking. ओके आपकी कॉलेज की स्टडी के बारे में बताओ ना. सो ब्रदर, मैंने कॉलेज आई डिड माई कॉलेज फ्रॉम एमिटी नोएडा, और मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज और मार्केटिंग में MBA की हुई है. तो मेरा एक बिजनेस बैकग्राउंड है, बट मेरा एक आर्टिस्टिक साइड भी है जो आप लोग देखते हो.
So that is about my college study. Clear हो गया होगा. Manik, your videos are just awesome. Thank you so much, Manik. I really appreciate it. It's without you guys, आप लोगों की appreciation के बिना it's nothing. Hi Kishan. LifeZe, which app you use for this wonderful art? So, ये एक question जो है कि what artwork do I, what tools do I use, which softwares do I use? ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे से. A lot of people ask me कि what kind of softwares are you using, what kind of tools are you using? So, basically मेरा जो workflow है, hi Midat, how are you? वेलकम एवरीबॉडी. सो मेरा जो प्रोसेस ऑफ क्रिएशन है उसमें बेसिकली मेजरली 3 टूल्स मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ. सबसे पहला है फोटोशॉप. फोटोशॉप इज एवरीबॉडी नोज व्हाट फोटोशॉप इज. इट्स द ऑल इन ऑल, गॉड ऑल, यू नो, द ग्रैंड डैडी सॉफ्टवेयर ऑफ एवरी सॉफ्टवेयर. इट हेल्प्स यू डू एवरीथिंग. जो आपको करना है वो आप कर सकते हो विद फोटोशॉप. सो फोटोशॉप इज़ वन. देन आई यूज़ Blender to create environments, to enhance styles. The Blender comes to work there. Then third, for AI assistance, I use Stable Diffusion. A lot of people confuse my work with Midjourney, but it is not Midjourney. जो diffusion part, जो AI part मेरे artwork में use होता है वो Stable Diffusion से होता है. और Stable Diffusion, if people don't know about it, it is an AI based artwork software जो अब बहुत it's being used very commonly, but most people know diffusion models Midjourney के नाम से. With Midjourney is another tool which is amazing. I don't use it much. I prefer Stable Diffusion. It's like आपको Photoshop पसंद है या आपको Corel Draw पसंद है, वो वाली बात है. It's to your own, जितना आप कंफर्टेबल जिस सॉफ्टवेयर के साथ हो. हाय डी किंग देव, हाउ आर यू? हाय कबीर, हाय शिवा, हाय दिव्यांशु. टेबल व्हाट? नाइस क्लिक. Who is your muse or divinity with whom you identify the most to create your visuals? Who is your muse or divinity? I connect to all divinities. There is something, some personality trait or some some characteristic of every divine entity that clicks with me. So I always tend to go towards whatever characteristic or trait attracts me. How are you, brother? I am good, man. Very good. आप लोगों से बात करके आज लाइव आके to talk to you guys. Listen, you guys are asking questions. Hi yoga with Rima. Hi Rima. Thank you for joining. Great to see you here. Hi Anshuman. Jai Shri Ram, my brother. So I also wanted to Stable Diffusion. I didn't hear well in the first go. Yeah, so it's not table, it was Stable Diffusion. Yeah, you can check it out. You can learn more about whatever I'm saying, whatever softwares I am talking about. Mainly Photoshop है, Blender है, Stable Diffusion है, Google Collaboratory है. ये सारे basically a lot of tools come together and you have to process it through these tools and get your visualization to what you want it to be. Please make something for Himalayas. DJ. Sure, man. Sure, absolutely I will. For Himalayas. वैसे भी the artwork of Lord Shiva of mine has the Himalayas. The mountains are always inspired by the Himalayas. Shivam official. Bro, next request to make Ma Durga. For sure. I am already working on Ma. So you will see that soon, Shivam. Stay tuned. Dev, upload new video today, brother. Dev, I did. आज मैंने एक नया रील पोस्ट की है. गो चेक इट आउट अगर आपने नहीं देखी है अभी तक. Yoga with Rima. Mumbai doesn't have much, so make it pretty. Make something about Mumbai. See. Sure, Rima. I'll try it out. I'll get in touch with you. I'll take some pointers from you about Mumbai. I guess you know more about it than I do. I've never been to Mumbai. I've been
a couple of times, but not gone around much. Sir, your creativity is mind blowing and awesome. I'm a big fan of you, bro. It is amazing how people are saying I am a big fan of you. You know, I never imagined that somebody could be my fan. मेरा fan भी कोई हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था. But लोग मेरे को अब कह रहे हैं I am a big fan of you. It's a great honor, brother. Thank you for appreciating my work. Thank you for supporting me. You like, you share, you guys comment, you guys tell me कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरा आर्टवर्क देख के. That is what my artwork is here for. That is why I am here. It is for you. So please next post Lord Ardhanareshwar. For sure. अर्धनरेश्वर का मैंने ऑलरेडी एक आर्टवर्क बनाया हुआ है. के शर्मा, आप मेरी प्रोफाइल पे जाके चेक कर सकते हैं. So yes, I have that in my plans. आगे जाके भी करूँगा. Your creativity makes me go into another world. That makes my day. अगर कोई ऐसा बोलता है कि your creativity makes me go into another world. I mean, you can imagine how much, if I could affect a person even this much, it is amazing. And people, when they express it, it is amazing to read. Please make something for Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes, Abhijit, absolutely will do. Thanks for letting us use the visuals. It's very humble of you. Thank you. It's for you. I can't, this also, मेरे को लोग पूछते हैं कि आप watermark नहीं लगाते अपनी videos पे, आप शेयर कर देते हो, लोग आपको बिना क्रेडिट दिए भी आपकी वीडियो शेयर कर लेते हैं. टू दैट आई वुड से see, to each its own. I mean, अगर आप क्रेडिट दो, which is the right way to do it, जब भी आप किसी आर्टिस्ट का वर्क यूज़ करते हो फॉर योर रील, या फिर अगर आप उसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ करते हो और इन अ वीडियो और इन अ ग्राफिक और एनीथिंग, डू गिव due credit to the artist, because that is the right way to use it. If people use it without that also, I take it as it's God's work, so let it flow. मैं उसको रोकता नहीं वहाँ पे. मैं ज़रूर जब कोई बिना क्रेडिट दिए शेयर करता है आर्टवर्क, उसको एक मैसेज भेज देता हूँ कि प्लीज़ ब्रदर और सिस्टर और ब्रदर सिस्टर और मदर, एनीवन, माय फ्रेंड, please do give credit, because without giving credit, it's not right to use anybody's artwork. Wishbone. I am also an artist. Any tips for me I can follow? Sure, Wishbone, just keep doing what you are doing. Keep practicing. Develop your own style. Develop your own style of artwork. People will love it. That's what they did with me. I also developed a style of my visuals. I have a very calm, a very slow, a very slow paced theme to my visuals, a very divine feel to it, a very calming nature to it. तो वो एक स्टाइल बन जाता है आपका. फिर people relate to you for that and people come back for that. So आपको एक स्टाइल बना लेना चाहिए अपना, डिस्कवर करना चाहिए अपने आर्टवर्क को मोर, and that's how those are my tips for you. Hi, Indian Guru. Hello, brother. Hope you are doing well. You are creating really amazing artworks. Keep it up, bro. Let me change the पीछे जो वीडियो चल रही है. Let me play a different one for you. How about let's go with this for a bit. Yes. So I wanted to talk a little about my Instagram journey also. A lot of people keep messaging me, keep asking me things about how are you growing on Instagram, what kind of ways, please collab with us so that mention our ID in your story, हमको mention कर दो, grow कैसे कर रहे हैं, क्या process होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. So let's talk a little about that also. A lot of people want to know about how to grow on Instagram and how to get more followers, how to get more reach. So as you know,
my Insta journey, I started in October last year. I started with Damodar challenge. This was एक challenge start किया था by the name of Damodar challenge. कुछ artists ने मिलके जिसमें उन्होंने 15 prompts of Lord Krishna's लीलाज और उनकी स्टोरीज से एक्सर्प्ट्स निकाल के 15 प्रॉम्प्ट्स बनाई थी जिनके ऊपर कोई भी अपने एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट वर्क इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल आर्ट, इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, किसी भी आर्ट फॉर्म में उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकता था उन प्रॉम्प्ट्स को. So that is how I started. When I saw that challenge on Instagram only, मैं scroll कर रहा था, मेरे को मिला पोस्ट कि ये चैलेंज चल रहा है, तो आई थॉट आई विल गिव इट अ ट्राई. एक बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा रहेगा. सो आई स्टार्टेड विद दैट. आई स्टार्टेड मेकिंग आर्ट वर्क ऑन दोज प्रॉम्प्ट्स. जो प्रॉम्प्ट्स उस चैलेंज में रिलीज होती थी फॉर द आर्टिस्ट टू एक्सप्रेस, मैं वो प्रॉम्प्ट लेता था और उस प्रॉम्प्ट को विजुलाइज करके उसका आर्ट वर्क बना के मैं पोस्ट कर रहा था. स्टार्टिंग में आई डेंट मेक एनी काइंड ऑफ videos. I just posted still images, still artworks. The I think around 6 or 7 of them were like that. Those were the first few posts, and out of that, one post was, I'll just put it up in the background for you to see. और आप सबको भी पता होगा, आप सबने मेरी प्रोफाइल पे ये ज़रूर चेकआउट किया होगा if you've been following me for that long. This one. So this, what you see right now in the background, this artwork, this is basically the artwork that got us running, that got Jedi art running. So this was Brahma observing Krishna. इस आर्टवर्क में बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता था. इसकी प्रॉम्प्ट जो थी वाज दैट पूरे कॉन्टेक्स्ट से हट के अगर सिर्फ हम प्रॉम्प्ट की बात करें तो प्रॉम्प्ट में था कि लॉर्ड ब्रह्मा गॉट सो एस्टोनिश्ड, ही वाज सो अचंभित रह गए थे वो कृष्णा की लीला देख के कि वो उनको ऑब्जर्व कर रहे थे. सो जब इसको विजुलाइज करना था तो आई थॉट आई हैड टू थिंग्स इन माइंड. वन वाज द the aura and the energy that Krishna must be, the energy that Krishna was excluding was, giving out, and Brahma was so amazed to see that. So that was the basis of this artwork. That was what was behind this artwork, and this was loved by so many of you. मतलब ये पहली ऐसी रील थी which really went viral. It's got around 1 million views right now, and it really got a lot of traction to my account. It really got a lot of eyes to my account. लोगों ने फिर देखना शुरू किया. Quite a bit of people have started following me, started appreciating my work through this first piece of artwork. And this was, I think, ये पहले महीने में ही था. ये पहले महीने of my Instagram journey. This one went viral and it really picked up. So thank you for that firstly. Then aram se, I kept posting. I kept consistent. I kept making artwork, kept posting it. You guys kept appreciating it. It went amazing. And dekhte we went to 5K followers. Thank you for that. Then I started getting some inquiries. ये मेरी Instagram journey की बात कर रहे हैं हम अभी. जिसने join किया है, just talking about my Instagram journey, what happened, what kind of artworks did I post. So yeah, once we got to 5K, then I started putting in more effort. I started animating. I started putting in more effort in the music. A lot of people appreciate the music also because I always, मुझे लगता है एक calm feel होनी चाहिए, एक divine feel होनी चाहिए. It should be relaxing to the person viewing, and that's the vibe I try to go for. So yeah, so we went to 5K. Then another one of my artworks, of Lord Shiva, which everybody appreciated a lot. Let me put that in the background now. This one. This artwork of Lord Shiva. So this actually was loved so much that I can't
even tell you, this crossed like 2 million views now. Right now it is at 3 million views, and this again got me so much attention from admirers, from appreciators, from in terms of work. Also, I got a lot of inquiries about artworks to be done for character portraits, and commissions for paintings, digital artwork, for canvas prints. So this artwork again was one of my most appreciated, most loved ones of Lord Shiva. And again, I think what clicked, इसमें जो क्लिक किया लोगों के साथ था, जो ब्यूटिफुल डिपिक्शन, जो काम डिपिक्शन, जो बहुत ही एक प्रिस्टीन सेरीन depiction of Lord Shiva is what people really appreciated, and I'm again always thankful for that as well. So then this was one of the second reels that went viral and got a lot of traction to my account, got a lot of eyes to my account. And by this time I was doing a lot of collaborations also. I got a lot of requests for commission work to be done as well. So the reach and the shares started going crazy. I started doing more collabs. I started posting more. थोड़ी consistency बढ़ गई क्योंकि motivation ज़्यादा हो गया. अब obviously बात है, when people appreciate you, people message you, people DM you, so then you also have a little bit of a responsibility to deliver that. So I did that. I kept consistent. I kept delivering what the people are liking. And dekhte we were at 10K followers. We crossed, around 5 million views on the account. The reach went to like 4 or 5 million people. And I started getting more inquiries for album covers, for music video animations, for lyrical videos, etc., etc. So, and yeah, now we are at around 16,000 of such beautiful, so many beautiful people, and we keep growing. We keep growing. Yeah. So, what else? Hello from Rishikesh. Hi Tarun. Hi Satyam. Hello भैया, कैसे हो? I am good. आप कैसे हो? Brother, don't you create it for NFTs, Divyanshu? Yes, I do. I've put some of my artwork as on sale as NFTs also. आप मेरी bio में मेरी Linktree link है, Divyanshu. उसमें OpenSea का link है. OpenSea पे listed है. So if you want to go check it out, the NFTs are there. And I would love if someone would like to buy it as well. So yeah, some of the good works that have been really appreciated by the people are of the one that you are seeing in the background of Lord Shiva right now. This was really appreciated. Then one of Lord Hanuman. This also got really appreciated. This one is one of the highest viewed reels on my account. It's I think around 5 million right now. Amazing. I love it how people connect, how people resonate with it. It gives me so much, just fills me up with gratitude. So yeah, this one was there. Then during Mahashivratri, when the Mahashivratri week was going on, मैंने एक वीक ऑफ शिवा सीरीज करी थी, जिसमें मैं हर रोज या फिर एक दिन छोड़ के उसके अगले दिन एक आर्टवर्क पोस्ट कर रहा था डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, एंड दैट वाज अमेजिंग. आई थिंक 2 pieces ऑफ कंटेंट मेरे उसमें भी मिलियन क्रॉस करे हैं. लोगों ने बहुत अच्छे से वेलकम किया है उसको. सो आई एम थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू डू आर्टवर्क्स फॉर द होल वीक. पूरे हफ्ते एक के बाद एक आर्टवर्क पोस्ट किया था मैंने महाशिवरात्रि के टाइम. बट अगेन इट वॉज, आई थिंक, द होल everything was falling into place at that divine time. The energy was such that I could also do it. I could produce it. मैं इतने artworks बना पाया और मैंने release किए और लोगों को अच्छे लगे. It was just a beautiful situation all in all.
Mahadev bless you, bro. Mahadev bless every one of us. Love you, brother. Love you too, Shivam. I can't believe people who I have not even met, they are seeing me for the first time. आज वीडियो पे पहली बार मेरे को देख रहे हैं, लेकिन and they are saying I love you. But I also love you guys. I love you guys back because you guys appreciate my work. It is for you to, judge without you guys appreciating, without you guys telling me how you feel about it. There is no point of it. Okay. Let me take some questions. Let me see. Awesome, and I love it. Thank you so much. Really, this is so divine. Thank you so much, Yatharth. Hi Tejasri, hi Keshav, hi Anand, hi Saurav. Good to see everyone here. Hi Ginny, hi Lucky, hi Manu. Can you teach me to create like you? Okay, so this question also I get a lot. Can you teach me? Can you tell me how to do these artworks? आप कैसे बनाते हो? कैसे करते हो? मुझे भी सीखना है. So people, there's a lot of inquiries, and there's a lot of people asking me if I can teach them this. So I can. That is not a problem, and I'm pretty sure that you people will learn it also. आप लोग सीख भी जाओगे, मैं सिखा भी दूंगा. बट इसको ठीक से करने के लिए I have a basic structure in place, which I'll let you know at the end. मैं थोड़े टाइम give me 5 minutes के बाद we'll talk about how the learning part of it. If you also want to create such images, if you also want to do such kind of artwork, तो वो अगर आपको सीखना है तो उसके लिए what I was planning was to hold 1 hour sessions on the weekends, on Saturdays and Sundays. I'll have a time, I'll have this listed in, मैं अपनी highlights में डाल दूंगा. और वैसे भी अगर जिसको भी whoever is interested in learning this kind of art, कि आप भी इस टाइप की images बना सको, आप कैसे बना सकते हो, कैसे सीख सकते हो, तो please DM me. DM में मैं better explain कर पाऊंगा. But for everyone in general, I am planning to have weekend classes, 1 hour sessions on Zoom, where I can share my screen and start teaching you guys. You guys can learn how to do this kind of artwork with me. So if you guys are interested in that, मैं अपनी highlights में भी एक highlight बना के उसमें सारी details दे दूंगा. You guys can DM me about it. जिसको भी, whoever is interested in learning such kind of artwork, please do DM for sure. We'll talk about it and then we can go forward from there. Mansi, it's divine. Thank you so much, Mansi. You are divine. Okay, love you, brother. How long it took, Wishbone, how long it took? What, for me to make one artwork, or how long it took? Depends. It depends on person to person. कोई 10 दिन में परफेक्ट हो जाता है, कोई 10 महीनों में, 10 सालों में भी परफेक्ट नहीं होता है. So it just depends on you. You keep working, you keep consistent, and I'm pretty sure you learn it, and you'll start doing things that you want to do. Hello sir, hi, you are great brother. Thank you Pranav, thank you so much. Deep XYZ, hey bhai, big fan of your editing. Thank you so much brother. Thank you Deep, means a lot to me. Brother, make Chhatrapati Shivaji Maharaj. So I'm getting a lot of requests for Chhatrapati Shivaji. I'll definitely keep that in mind and definitely make one soon. Okay, so another one of my artworks that did really, really well was this one. Oh my god. I mean, I can't believe it. This was for Holi. This was a Holi special that I did. And I posted it at 7:30 in the morning. मैंने सुबह इसको post किया था.
बना के पूरा कंप्लीट करके। एंड मैं 10:30 बजे उठा ब्रेकफास्ट करने के लिए, थोड़ा लेट उठा, और 10:30 बजे मतलब विद इन 3 घंटे में अराउंड 600,000 व्यूज एंड अराउंड 20,000 likes this did, and this went crazy viral. I remember the Holi, I posted this one day before Holi or on the day of Holi. I did a series of two edits, two pieces of artwork for Holi. The first one did well. The second one, which is this one, oh my god, I mean, this went crazy viral. In the first day itself, it was at, I think, 3 million views, and by the second day it was around 5 million views. And it keeps going, keeps sending me notifications that people are still appreciating it. So thank you so much. Okay. Make several Maharaj pictures. Sure, bhai, I'll do that. SRC Chavan. Ann Kings, मेरा भी नेम ले लो भाई. Ann Kings, hi brother, ले लिया. You are phenomenal. How can you make this? So प्रणव, जैसे मैं पहले बता रहा था, मैंने अपनी प्रोसेस और वर्क फ्लो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये सब मैं डिजिटली बनाता हूँ. I use a few tools. Some of them are Photoshop, Blender, and Stable Diffusion. I use a combination of all three to make these artworks. You have to imagine and then you have to do. Love you, bhai. Love you, brother. Hi, Mansi Sakaria. Do I need high quality setup to start AI art? Divyanshu. Do I need high quality setup to start AI arts? Divyanshu, it is a added advantage if you have a good quality setup. अगर आपके पास बहुत अच्छा कंप्यूटर है, विंडोज़ कंप्यूटर है, अगर आपके पास एक बहुत ही हार्डकोर जीपीयू है, तो यस वो इन्हांस करेगा, बट एज सच आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये एक बेस अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गुड कंप्यूटर्स, गुड लैपटॉप्स कैन रन दीज सॉफ्टवेयर्स. तो आपको इतना हाई क्वालिटी सेटअप नहीं चाहिए. मेरे पास भी एक मैकबुक है, एक मेरा आईपैड है, और एक मेरा विंडोज़ लैपटॉप है, और एक मेरा पेन टैबलेट है. दीज आर ऑल द टूल्स दैट आई यूज़. So it is not that crazy of a setup that you need. You can do it with basic setups also. सर, मैं आपके रील्स को अपनी स्टोरी में लगाता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं. थैंक यू सो मच ब्रो. कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, और शेयर करते रहो थोड़ा सा. प्लग इन. एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग, प्लीज़ शेयर माई वर्क. प्लीज़ follow, send it to your friends, send it to share it with people who you think will like it and appreciate it. It helps me. Okay, another very crazy point. Oh, sorry. Another very mostly asked question to me is, can you make money on Instagram? Are you making money on Instagram? आप कितना कमा लेते हो? आपके तो इतने फॉलोअर भी हो गए, आपके तो इतनी रीच भी हो गई. एक तो मेरे को पता नहीं लोगों को रीच मेरी कहाँ से पता चल जाती है, बट चलो. So no guys, Instagram is not paying me anything as of now. I would love for them to start paying me. That would be amazing. That would be the best scenario. But right now they're not paying me anything. Any kind of monetary benefit जो मेरे को इस account से होता है is only through paid work, brands. If they come, I've got a few brand collaborations also lined up. मैं अभी recently ही start हुई है, तो Instagram is not paying me. It is just the money I make through this profile of mine is work. If I get work through here, if some people send inquiries, they want to get something done in the form of graphics or artwork or characters, or book covers or album covers, in चीज़ों में from that I make money. And yes, from commissions, if somebody orders my artwork, then I get paid. Otherwise no, Instagram doesn't pay you like that. Mind opening facts. So sir, you don't use Midjourney, and please do a teaching session. Mind opening facts. Yes, I just mentioned mind opening facts के I'm planning to do teaching sessions on the weekends. 1 hour sessions होंगे.
it'll be paid. You can DM me for more information, and also I'll put a highlight in my profile. वहाँ पे जाके you guys can check out and know about the teaching sessions. If you want to learn, how can you learn with me? Which software I have to learn? Narendra Kanagar. So it's just not just one software that you have to learn. You have to learn three, four at least, a couple of them at least to make something out of it. Thanks for existing such a polite guy. Thank you so much. Thank you so much, man. ये सीखने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत होती है, फ़ोन में नहीं सीख सकते. आप सीख सकते हो फ़ोन में. आप जूम इंस्टॉल करो, मेरे साथ टीचिंग सेशन में आओ, आप सीख सकते हो. बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए और आपको अपने जो भी आपने सीखा है उसको यूज़ करने के लिए तो आपको आई थिंक यू नीड अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप. विदाउट दैट इट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल. ब्रो, योर पोस्ट एंड वीडियोज आर सुपर्ब. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. Software name suggestions. Yes, Narendra. The software name suggestions are Photoshop, Stable Diffusion, Motion Leap. नोट कर लीजिए. ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली. बट ऐसा नहीं है कि यही सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं. लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करके भी बनाते हैं. तो अगर सॉफ्टवेयर एज सच कोई एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है. आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं. लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर आर देयर टू यूज़. बट जिस पे भी आप कंफर्टेबल होते हैं वो सॉफ्टवेयर लेके अपना एक वर्क फ्लो बनाइए, अपना एक आर्ट वर्क का स्टाइल बनाइए, and then you do it. Again, I'd like to tell you guys, anyone who's interested in learning this, please DM, or you can go check out the my highlights. Usme mein I'll put a highlight with all the details of how you can get in touch with me and do participate in these teaching sessions, be a part of it. That would be amazing. Also, guys, I really want to give some shout outs to a lot of people from the start. I mean, from day one from 0 followers or maybe 5 followers who were my friends जिन्होंने starting में follow करना start किया था. From those 5 followers to 15,000 followers right now, there are some people who have been absolutely constant. बिल्कुल constant रहे हैं सपोर्ट में अपने, और अपने लव को मेरे आर्टवर्क पे शावर करने में. दे हैव बीन अप्रिशिएटिव ऑल थ्रू. आई वुड लाइक टू टेक देयर नेम्स. फर्स्टली देयर इज शिफाली जी from she has a tarot card reading and a spiritual healing page on Instagram. I'll link that also. Shifali ji has been amazing. She's also the first person who commissioned my artwork for her and her niece, Sana and Shifali ji. So a big shout out to both of them. Shifali Guidance for Life, that is her page name. Shifali ji, thank you. Thank you, Sana. Thank you for being supportive always. From day one, you guys have been really kind to me. Really supportive, always helpful, always there to let me, if I have something to ask. Shifali ji has always helped, so thank you so much. Then there is JK Diaries. So there is a page called JK Diaries. उन्होंने भी बहुत support किया है. उन्होंने मेरा content बहुत share किया है. Always they tag me, share my content always. So thank you so much, JK Diaries. Thank you so much, Sri Kala. Amazing page again, always been supportive. Then there is Aleha. Thank you so much if you're watching this. Aleha is from Spain, I guess, if I'm not wrong. She has a yoga based page. Aurum Om is the name of the page. She has been very supportive throughout. There's Vijit. Vijit is a author. उनकी novel के characters का post मैंने 2 दिन पहले डाला था. Amazing guy. He got in touch with me through Instagram only, and we started working on the character portraits for his novel. That were so thank you, Vijit. Thank you for
giving me that opportunity. Thank you for getting in touch so that we could do this together. It was really amazing working with you, working for your novel. Then there is Coriana. Coriana is another artist. She does graffiti. She does wall art, murals. She's been really supportive. She is actually doing a rendition of one of my artworks. वो मेरे ही एक आर्टवर्क को फिर से कोरियाना बना रही हैं. तो वेन एवर शी रिलीजेज इट तो ज़रूर go check it out. Then there is Art as Well, which is a very big page run by Shaunak from Netherlands. He's been very supportive. He really appreciated my work, and that was a big thing for me because he is one of the, we could say, इस niche में वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने मेरा आर्टवर्क अप्रिशिएट किया. इट वाज added motivation to me. Then there is Jainin. Jainin is a music producer, and he's made a very beautiful song called Jai Radhe. उस पे मेरा एक artwork है on Radha Krishna, and that did very well. He got in touch with me. He was really appreciative that you used my music, and go listen to his music. Follow him. He's a great artist. Then there's Yoga Acharya, who recently started following me. Oh my god, really inspiring person. You go check out his profile. He climbs mountains. He's out in the rivers, in the jungles. Amazing. What a guy. He started he's really appreciative of my work, and I thank him for that. Then there is Divyanshu Sharma. Again, starting से दिव्यांशु शर्मा ने मतलब एक पोस्ट नहीं छोड़ा मेरा, एक रील नहीं छोड़ी, एक piece of content नहीं छोड़ा, हमेशा शेयर किया, always been supportive, so thank you. Then there is David from Brazil. I'm giving shout outs to these people because these guys have been really, really supportive. So thank you, David. If you check this video out, he doesn't come on Instagram much, but whenever he does, I think he likes my stuff and he even DMs me. So hi, David. Thank you so much. Cheers, brother. Okay. So those are some people that I really am appreciative of. Okay. Any questions now? मेरे को जो बताना था आपको, मेरे को जो आपसे बात करनी थी, मोस्टली मैंने बता दिया. दीप XYZ भाई मुझे DM करके अपनी जूम मीटिंग का डिटेल. दीप XYZ आप मेरे को प्लीज़ DM कीजिए. I'll reply to that DM and then we can take it forward. हम वहाँ से आगे बात करते हैं. आप मेरे को DM कीजिए, ठीक है? Keep going. Your art is amazing. Thank you so much, Vijay. Thank you so much for appreciating. It really means a lot to me. Okay. Please welcome, sir. Udaipur here's lots of places for your best creativity. Thank you. Yes, surely I've been to Udaipur. It's a beautiful city. I'll come again. I'll meet you. Okay, so I also wanted to, tell you guys what is coming. एक sneak peek भी देना चाहता था मैं आपको कि अभी आगे किस टाइप के आर्टवर्क्स आने वाले हैं. और जो मेन right now is in plan is for Ram Navami. Like you guys gave a lot of love to my Holy series. I am doing something. मैं राम नवमी के लिए भी एक सीरीज बनाने वाला हूँ. तो please show as much love as you did to the Holy series and give as much love to this as well. So yes, Ram Navami series is coming. Then another thing that I'm working on my website also. So the website will be basically a one-stop place जहाँ पे आपको high definition में मेरी videos मिल जाएंगी, artworks मिल जाएंगे for prints. If you want to order prints, that will be available there. So it will be basically एक stop होगा जहाँ पे आपको अगर कुछ भी मेरे artwork के related चाहिए कुछ, या फिर if you want to get in touch with me for collaborations or work for your any kind of design work, any kind of artwork, you can get in touch with me in there. So guys, any questions? कोई भी question है, please do feel free to ask me. मैं आपके सारे questions का answer
जैसे आप चाहते हैं वैसे दूंगा. Keep going, your art is amazing. Thank you so much. Thank you. Again, I'm saying whoever, a lot of people keep asking me the same thing. How can we learn this? What kind of softwares do you use? आप क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? ऐसी एडिटिंग मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे भी सीखना है. जिसको भी सीखने में इंटरेस्ट है, जिसको भी ऐसा आर्टवर्क बनाने में इंटरेस्ट है, प्लीज़ डीएम करना मेरे को. और एक बाय द नेम ऑफ टीचिंग सेशंस या फिर लर्निंग, मैं एक हाईलाइट डाल दूंगा. उस हाईलाइट में मैं सारी डिटेल्स मेंशन कर दूंगा ऑफ द लर्निंग सेशंस, विच मैं सोच रहा हूँ कि वीकेंड्स पर एक एक घंटे का सेशन होगा. तो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप प्लीज़ मुझे डीएम कर सकते हैं. येस सर, टीचिंग सेशन इज पेड और फ्री. माइंड ओपनिंग फैक्ट्स, इट विल बी पेड. It can't be free because I also have to give time to my work. So making time and teaching other people, it takes a bit, effort. So it'll be paid. It won't be free. And जब paid होता है तो दोनों तरफ there's some kind of skin in the game. So हर का अपना अपना responsibility होता है, आपका सीखने का, मेरा सिखाने का, तो वो better हो जाता है. So it will be paid. It will not be free. आप कहाँ से हो? मैं चंडीगढ़ से हूँ. मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप मेरे ख्याल से लेट आए हैं. सो मैं चंडीगढ़ से हूँ. आप कौन से सॉफ्टवेयर में काम करते हैं? फोटोशॉप, ब्लेंडर, स्टेबल डिफ्यूजन. सो गाइज, एक्साइटिंग थिंग्स आर कमिंग अप. राम नवमी के लिए आई एम डूइंग अ सीरीज. सो एंड अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क विल बी कमिंग बेस्ड ऑन Lord Shri Ram, Lord Hanuman, and Ram Navami in as a whole. Take questions. Give me questions. I'm here for questions, guys. आपका कितना एक्सपीरियंस है इसमें? Shivam, in artwork design, it's been 6 to 8 years now. I've been in this industry for 8 years. I've been doing client work, working with corporate clients, working with political clients, working with sports clients for years now. So it's been 6 to 8 years that I've been in this industry. दीप XYZ भाई, जूम की क्लास की फीस कितनी होगी? दीप XYZ, ये हम डीएम में बात करेंगे. आप मुझे डीएम कीजिए and we'll do it. Nishant Pithia, I work for Adobe. Great, man. That is amazing. Congratulations for that. That you're working in Adobe. Adobe is the daddy of all creative softwares. I love Adobe. Please go tell in your company that I love your softwares. What's your thoughts on AI? AI is amazing. Nishant Pithia is asking, what's your thoughts on AI? AI is amazing. AI assists you. AI gives you the tools. AI gives you the power. आपको कितना easy कर देता है चीज़ें. जो आप usually would go through a step by step process होंगे, वो steps हट जाते हैं. It straight comes to the result. So AI is great. I think everybody should embrace artificial intelligence. Yashi, your work is really beautiful, sir. Thank you so much, Yashi. भाई जी हनुमान जी ओपन चेस. यस शिवम, अभी रामनवमी की जो सीरीज आ रही है, आई एम प्रीटी श्योर आपको ऐसा एक आर्टवर्क देखने को मिलेगा. तो प्लीज स्टे ट्यून, कीप शोइंग योर लव. शिवम, बाय. बाय. No, I haven't used Majestic AI. The AI of my preference is Stable Diffusion. So I do like that. Okay, so I have a question. So I have a question from my friend, one of my friends. Why you did not go to Jim Corbett with your friends? Okay, guys. So I had a planned trip with my friends, but I couldn't go because I had some other plans. So if that answers your question, my friend.
Okay, let's change the background also. All right. So, guys, any more questions? I think everybody is happy. Everybody is. I've answered most of your questions, and any other questions also. I'll come. I'll be coming live. We'll make this a weekly thing or a fortnightly thing. We'll do more lives. ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा interact करेंगे, तो आप लोगों के questions भी जो होंगे वो मैं answer कर सकता हूँ. कुछ about whatever, about my artwork, about life in general, about being spiritual or anything. I'd love to answer your questions. So we'll do ये lives हम और ज़्यादा करेंगे. ताकि सबको different time slots में करेंगे, ताकि everybody gets a chance to be here, ask their questions, and the next time आप भी अगर मेरे साथ live में join होना चाहते हैं तो we'll do that also. So guys, I think भाई मैं आपकी होली भाई तुरंत फॉलो कर दिया बिकॉज आपके लाइव में सीखने को मिल गया. थैंक यू दीप, थैंक यू सो मच. आई एम ग्लैड आपको मेरे से कुछ सीखने को मिला, आपने मेरा आर्टवर्क अप्रिशिएट किया. दैट्स अमेजिंग. Thank you so much. So, also, guys, in the end, I would like to say any kind of, brand work, any kind of artwork, whether it be for, commercial purposes or it be for your personal purposes. Like if you want to get art commissioned, if you want prints, if you want some characters made, if you want storyboarding done, if you want animations done, if you want some kind of videos done, do contact me. I am here for commission work. DM me. Check out my link tree in my bio. उसमें मेरी सारी links दी हुई हैं. So you can go check out all my links there. It's got my OpenSea for my NFTs. It's got my personal Instagram. It's got my email address if you want to contact me through my email. If you want to contact me through my DM, I'm always available. So please DM whatever you want to ask me. DM. I do reply to my DMs. I do reply to all my comments, all my DMs. So I'm always there. I'm always listening to your comments. I'm always reading. आपके आर्टवर्क के कलर्स अच्छे होते हैं. थैंक यू सो मच राम अशोक. आई एम ग्लैड आपको अच्छा लगा. ऑल्सो गाइज, आई हैव recently recorded a podcast, so that is also going to be coming soon. मैं अपनी stories में link डाल दूंगा, वो भी जाके ज़रूर check out करना. And yes, I think it's been a great time. 40-45 minutes have passed. मुझे पता भी नहीं चला. आप लोगों के questions answer करते हुए सबको hi बोलते हैं, सबको thank you बोलते हैं. I'd like to take your leave now, and we will do this more often. It was great fun. Again, everybody, whoever wants to learn, DM me. Whoever wants commission work, design work, any kind of marketing work, brand work, character building, character portraits, any kind of storyboarding done, get in touch. I'm here to get it done for you. Shubhangi Rai, I love the holy reel. Thank you so much, Shubhangi. I'll just put the holy reel in the end while we are leaving. You can check it out. Everybody can check it out. And guys, also I posted today. Also go check out on the profile. Like, share, comment. It feels funny saying this, but थोड़ा तो plug in चलता है अपना भी. Like, share, comment, follow. Share it with your friends. Share it with your family. Because I think my content will connect with most of the people. So yeah, thank you so much, guys. I'll see you soon again on भाई हिंदी में बात करा करो ना. सॉरी भाई, मैं ये कह रहा था कि जिसको भी सीखना है, जिसको भी कोई ब्रांड वर्क है, मार्केटिंग वर्क है, कोई आर्ट वर्क्स हैं, प्रिंट्स हैं, स्टोरी बोर्डिंग करनी है, कैरेक्टर पोर्ट्रेट्स बनवाने हैं, तो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए. ऑल दैट काइंड ऑफ वर्क मैं करता हूँ और आपके लिए हाजिर हूँ करने के लिए. सॉरी मेरी थोड़ी सी मैं लैंग्वेजेस स्विच करता रहता हूँ, बट यस,
और बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आप सबसे सबको हेलो बोल के, और इतने लोगों ने ज्वाइन किया, अपने क्वेश्चंस पूछे। आई होप मैं सबको अच्छे से आंसर कर पाया। एंड और करेंगे, और लाइव्स करेंगे, और इंटरेक्शंस करेंगे, विल बिल्ड टुगेदर। जैसे अभी तक आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया है, अपना लव दिखाया है, प्लीज़ कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। एंड ऑल द पीपल जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हाय हाय हरमन, लव इट, थैंक यू सो मच। मानसी, हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। Rishabh, you are the best artist on Instagram, sir. I am so thankful to you, Rishabh. आप means a lot to me. So guys, I'll take your leave. I think we'll finish the live now. It's been a great session. बहुत मजा आया मेरे को भी. And I'll see you soon. Cheers, guys. Thank you. Bye.